Take one is bookish knowledge, right? It's not a bookish knowledge. Do you say it a bookish knowledge? ये जितना कुछ मैं दे रहा हूँ इसके लिए तुम्हें 2 वॉल्यूम पढ़ने पड़े, right? I give you in a way, in a very simple mode, right? हाँ, ये नई नॉलेज निकली है, ओरिजिनल. Very good, very good. So it's knowledge with experience, right? I have to make a way that can find a way into your hearts and into your minds and into your souls. I cut my lectures, I talk with you, make you alive, then I feed a bombard. उधर recording हो रही. ठीक है? So I bombard with the knowledge with a very, very careful way, right? So compilation of hadith निकाले. अभी यहाँ तो हम पढ़ रहे थे टेक्निकलिटीज कि किस तरह वो इन्वेस्टिगेट करते थे ना हदीस को. ठीक है? So the Prophet Muhammad sallam, it was the history of compilation of hadith can be divided into 5 periods. The efforts and the endeavors of the Muslims in gathering together and preserving hadith is one of the greatest achievement. I told you this was a bracket for a very limited time in which Allah subhanahu wa ta'ala through his will, excuse me, lecture record ho raha hai, print of silence, okay? Thousand will listen this lecture, okay? If we have that intent, okay? So मैं क्या कह रहा था कि Allah opened that bracket in which he, you know, he founded those personalities who actually were the icons. They had supercomputers in their mind. Amazing personalities. You won't find in any era like this. In any era, you won't find people like this. Especially where we are talking about hadith. Okay. So the first period obviously begin with the Prophet Muhammad himself. During the period, he emphasized the importance of sunnah. He said, whosoever turns away from my sunnah is not amongst us, right? Okay. Consequently, the Sahaba followed the sunnah in minute ये लिखा होगा, हाँ, minutest detail. ठीक है ना जी? I told you that they were very keen about the Prophet Muhammad sallallahu and his sunnah, right? And they used to absorb very keenly, okay? And they used to do it in a very beautiful manner, okay? So furthermore, the Prophet Muhammad sallallahu dictated many letters and others documents. Thus, the compilation of hadith was already started. When were the letter written? When were the letter written? Can you give me any example? सुलह हुदैबिया के मौके पे वो पैक्ट था. That was not a letter. Letter बादशाहों को लिखे थे ना, याद है ना? हाँ. He used to write to the empires. वो कहते हैं कि think locally. पूरा करो इसको. Think locally and act globally. So while he was sitting in Medina, he had his eye on the whole of the humanity, not just the people of Medina. Okay, right? The second phase period extends from the Prophet Muhammad's death to the end of the first era. I told you how Amr ibn al-As used to write hadith. Didn't I tell you that? So Abu Hurairah is the one who had, most of the ahadith, many ahadith revealed by the Prophet, narrated by the Prophet Muhammad, but Amr ibn al-As count of hadith is more than Abu Hurairah. Why is it so? Because he used to write it. So one day he stopped.
Didn't I tell you this story? One day he stopped writing. The Prophet Muhammad said, "Why did you stop writing?" He said, "Oh Prophet, sometimes you are in a very casual mood. Why should I write when you are casual?" The Prophet Muhammad said, "I bear witness to the one who has my soul in his custody. Nothing comes out of from this tongue except for haqq, except for the truth." That's why the Prophet Muhammad, when he was used to joke, he used to cut jokes, right? Even those jokes were very meaningful. A Baddu, a tribal person, came from the tribe, Baddu, known as Baddu. He came and said, "Oh Prophet, why don't you give me a camel?" And the Prophet Muhammad ordered the companions to give a baby camel to the person. And the person became furious. "Oh Prophet, I asked you about the camel and you dare give me a baby camel? How is that possible? Hmm? Does this doesn't look, obvious to you?" So the Prophet Muhammad smiled and said, "Oh my dear Bedouin, Sada, simple Bedouin, don't you agree with me on the point that every camel is the baby of another camel?" He was not like us, right? He was very jolly. He used to be very smiley personality, okay? In the times of grief, in the times of tension, in the times of starvation, he used to smile. So what smile does? It almost kills that pain into your heart, okay? And gives you the power to absorb it, okay, through patience, okay? So keep giving smile to those who give you pain. That will shun them off from their act, okay? I'm giving him a pain and he's giving me a smile, right? So the second period extends from the Prophet Muhammad's death to the end of the Prophet of the 1st century Hijrah, right? The Sahaba were very conscious about relating anything to the Prophet, since they had heard him say, "Whoever lies about me, let him take his place in the hellfire." I told you in the morning, right? "Man kadhiba alayya muta'ammidan فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ إِلَى النَّارِ أو كما قال عليه الصلاة والسلام." Some prominent ones were Abu Huraira, Amr ibn al-As, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, Zayd ibn Sabit, and Abdullah ibn Amr ibn al-As. Okay? Okay? The third period begins from the turn of the 2nd century, Hijrah, and is spread over the period of 5 years. This is a formative period for sciences of Hadith that we have learned in the morning session, right? Those beautiful, investigative and, techniques that you won't listen in any media house or any agency of information. Do they follow like that? एक मुबैना खबर है ये उड़ती हुई, चलो जी चला दो। वो भेड़ बकरियां 24 करोड़ अवाम कि जो मर्जी तुम टीवी पे चला दो मान जाए। मुबैना, पीछे अपने एजेंडे होते हैं, ठीक? जराए के खुफिया जराए से मालूम है, पता नहीं। जनाब ये है वो जराए जिससे हमने अरबों कमाए, ठीक है? अल्लाह दे रोजी तो इज्जत की दे। फरमाया, ए मेरे बंदे, तुम मेरे वो जो दिया हुआ थोड़ा सा रिस्क है ना, उस पर राजी हो जाओ। क़यामत के दिन मैं तुम्हारे थोड़े से अमल पे राजी हो जाऊं। हाँ, नॉट वो कहते हैं ना, नॉट अ बैड डील एट ऑल। हमारे अमल क्या है? Even if we do thousands of amal, but the weight of that amal are very, you know, the prayers we pray, the salat we pray, if we weight them, that won't be more than 50%, right? And person like me, not more than 20%. इतनी weak salat है मेरी, नमाज is so weak, okay? तो अल्लाह ताला बस उसमें वेट खुद ही डाल दे। से आमीन।
So the scholars began to exercise great care in accepting the hadith. Okay. So Ibn Mubarak used to say, "Lawla al isnad, lawla al asnad, laman qa laman qala, laqala man sha'a ma sha." अगर ये सनद ना होती ना, chain of narrators ना होते, so whomsoever, whatsoever they would have keep on narrating from the Prophet Muhammad sallallahu. That's why they used to ask about the asnad. From whom did you hear? Hmm? तो मैं दोस्त दोस्त से पूछे, यार बता तेरी सोर्स क्या इंफॉर्मेशन, तूने किसे, वो नाराज हो जाएगा, यार तुझे मेरे पे एतमाद नहीं, right? But they didn't care because it was very sensitive. Okay. So book of hadiths were being compiled in major cities from Muwatta of Imam Malik in Medina, Jamia Sufyan Sauri in Kufa. So these were the first books of hadith, right? I told you. The fourth period extends from the middle of the second of the 5th century. आ रहा है ज़हन के ऊपर, दोबारा बोलो. Middle of the second to the 5th century Hijra. Middle of the second. तो ये कितने बन गए, कितने 100 साल बन गए, 250 साल बन गए. The Muhaddisin had up till now relied heavily on memory. I told you they were supercomputers. We'll see how. Okay. I told you that source of compilation of Quran and Hadith, the major sources are two. Okay. One is their memorization. Huh? They used to, admire themselves, Arabs. Not now, nowadays, but at that time, their memories was very accurate, right? And that was a supercomputer at that time. Their heads were, So, and the second part is very important, that the compilation was being held not solo. It was a state decision. Keep this in your mind. It was not a solo effort. It was done through the state. So Abdullah ibn Abdul Aziz, Abdullah ibn Umar ibn Abdul Aziz, who was Muhaddis himself, when he was Khalifa, he initiated a letter to the Muhaddithin to compile hadith, so that these fabricators who were fabricating the hadith, they must be caught. Understand? So thus they developed the science of hadith. During the period, many voluminous books of hadith were written, like Musnad. Do you know what Musnad is? Musnad is a book of hadith written according to the names of Sahaba. For example, Abu Hurairah, certain 1,000 were revealed from him. So in one go, the writer used to write the hadith. Then the next come Aisha Raziallahu Ta'ala anha, is a hadith. Okay, then Ali Raziallahu Ta'ala, for example. So narrator by narrator, they used to compile hadith. This is known as Musnad. Musnad Abu Dawood, Musnad Abu Bakr, Abi Sheba, Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal, which is one of the 6 books. Okay, a compilation of 30,000 ahadith, right? And Musnad Abdullah ibn Hamid. So all of these were written in the form of Musnad. Okay, from 211 to 296. The 6 conical books, As-Saha, As-Sitta. What's so special about it? Tell me. Yes. ठीक है, these are 6 books. Why are they called Sahih? Yes. At least those 5 conditions were fulfilled. Very good, very good, very good, amazing.
देखिए हदीस को एज ए इल्म देखें, आप हदीस को ऐसे इल्म देखें, उसके बाद पैरामीटर समझने के बाद यू आर फ्री टू मेक योर माइंड, राइट। बट जो रिवायत है वो किस तरह से कॉपी होनी चाहिए, आपको उसके स्टैंडर्ड्स पता होने चाहिए, ओके। देन यू फॉलो द बुक, यू मस्ट नो कि इसने इन चीजों को वो किया है कि नहीं किया, फॉलो किया है कि नहीं, एंड यू विल गेट योर आंसर, ओके। Six canonical books, and the 3rd century Hijra is aptly no, मैं उस दिन गया था, मैं हुंजा में से होके आया हूँ। हुंजा में मुझे इनवाइट किया था, एक बहुत बड़ा मदरसा बन रहा था, एंड दैट वाज मदरसा ऑफ अहले तशी, एंड आई वाज इनवाइटेड देयर एज लेक्चर। फिर लेक्चर में दे नहीं सका, टाइम को थोड़ा था। they requested from me to give a lecture to the students and then so I asked them, what is your course outline, syllabus दिखाओ मुझे, ठीक है। So the person over there in charge had 11 years spent in Minhaj University Lahore. He said कि हम सहाय सित्ता भी पढ़ाते हैं। इल्म तो इल्म है ना, ठीक है। तो कोई भी किताब है उसको तो खोलता है इंसान तो बगैर किसी प्रेजुडिज्म को खोलना चाहिए ना किताब को, ठीक है। हाँ उसमें कोई नेगेटिविटी है तो वो एक अलग बात है, बट यू आर स्कॉलर्स नाउ, राइट। व्हाट डज यूनिवर्सिटी गिव्स यू, इट गिव्स यू नाइफ, understand, either you can kill someone with it or you can cure with it, it's on you, ठीक है। डॉक्टर के हाथ में अगर नाइफ हो तो वो आपको जो यूटेंसिल्स दे रही है ये यूनिवर्सिटी, आपकी मर्जी, उसको आप गलत यूज कर दें तो आपकी पर्सनैलिटी बड़ी फैटल हो सकती है सोसाइटी के लिए, राइट। क्योंकि तुम पढ़े लिखे लोग हो, दाएं की जगह बाएं ले जा सकते हो सोसाइटी को, बाएं की जगह दाएं ले जा सकते हो, ठीक है। So in these 5 years you will be so cultured that you will exactly know how to reason, okay, and you will exactly know how to research a topic, इतना आपको प्रैक्टिस कराएंगे कि आपका जो है ना वो आपके जो है ना एक अंदर सर्च इंजन और एक इंजन आपके अंदर जो थिंकिंग प्रोसेस है वो बड़ा रिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो that can't be until and unless you are part of the system, right, and now you are part of the system, you will go through inshallah. So the 5th period, this period is completion of compilation of hadith, गलत तो नहीं कर गया मैं, अच्छा सॉरी, अच्छा ये 4th पीरियड में ही आती है साए सित्ता, ओके। साए सित्ता जो है ना 4th पीरियड में ही आते हैं, और आपको अंदाजा भी है कि इमाम बुखारी वाज द आइकॉन ऑफ दिस नॉलेज, ही वाज नाबीना। नाबीना को क्या कहेंगे इंग्लिश में, ब्लाइंड। तो so his mother prayed, oh God, give him eyes, and Allah bestowed him with 6 by 6, I would say 8 by 6. He used to ride under the light of moon, beautiful. And let me tell you about how conscious he was. Okay, so he was going to a voyage, sea voyage. Did I tell you the story? Once he was going to the into towards somewhere and was going into a sea voyage, and he met a person. When you are in a traveling mode, you keep on discussing thing with others. So carelessly he told him that he has 20,000 dinars. The person was Kazakh pirate. So after the meeting he started shouting, oh, I have lost my 20,000 dinars, where are they, whom is the responsible of this theft? So, the in charge captain of the ship started an investigation by investigating and checking the goods of the people. So when it came to Imam Bukhari rahmatullah alayh, when he क्या कहते हैं उसको,
checked him. They couldn't find that 20,000 with him. So the looter, after the investigation was over, came to Imam Bukhari and said, you said that you got 20,000 dinars. Where are they? So Imam Bukhari said, I threw it into the water. And he said, why did you do so? He said, because I am into a knowledge. I am serving a knowledge. If this much bit of my character is questioned, the whole knowledge is going to be lost. I told you, you cannot afford to have a, small, a bit of a doubt in your, character. That would spoil the whole. Na karo, bacho, na karo. Na karo. So this was Imam, and mind you, his brilliant mind, you will see that almost 6 lakh hadith, about 6 lakh hadith, he learned it by heart. By saying 6 lakhs means that 6 lakh different chain of narrator. He memorized it by heart. Once he came to Baghdad, people, decided to check him, check his mind, his ability, his memorization. So 10% came, every person presented 10 hadith in a gathering where Imam Bukhari was there, okay? And in 10 hadith, the person changed the chain, for example, from this to this, and from this hadith to this one, he intermingled all of the hadiths with the chain of narrators, mixed it, and 10% came one by one narrating to Imam Bukhari. When they finished, Imam Bukhari said, are you complete now? They said, yes, we are complete now. He again started with the first person, that these were exactly 10 that you told me, and chain of narrators which you told me, this chain of narrator actually belongs to this one, and keep on correcting one by one, and all 100 completed in that single sitting. That was his marvelous, piece of ability that Allah gave him. So tell me, can I give you any example in this world right now? A person like that? Simple. So how can I, sometimes people ask, tell me how is compilation of hadith, so reliable, there may be wrongs into it. There may be, some flaws into the compilation. How could we exactly tell them? Although it is a man-made effort, accepted that, but still look at the carefulness of those people who strived their lives. And after Umar ibn al-Abdul Aziz declared to compile hadith, there were international travelings, tours towards different cities, towards different states, where all the ravis were spread. So if the muhaddith, he knew, he came to know that there is someone in Basra who has some hadith, he used to ride a camel and used to go there and listen from him himself. So there was a muhaddith. He went to a person by traveling so many days. And when he reached that person, the person was, catching a horse which was hostile, right? And when he came near to that horse, he was like, you know, he was taking his shirt like that, okay? Positioned his shirt like that. So when the horse came near to that person, in a greed or in a chance of eating something, he grabbed the reins, and when he, left his kameez, the muhaddis saw that there was nothing into it. So he said, oh, if you can, disguise this horse, you can easily disguise me as well. He did not listen the hadith and went off. This was the carefulness. And then there is another muhaddis who went to the far away land to listen a hadith, right? And when he reached there,
he asked the person, the Ravi, did you narrated this hadith? He said, okay, yes, I have a hadith. He said, narrate. When he completed his narration, he did not stop for a single glass of water. So the Ravi said, sit with me, have lunch with me. He said, no. Then my intention would be a bit of impure. There would be another intention that I wanted to have a personal meeting with you. I wanted to spend a personal time with you. So, originality in my work will be compromised. That's why I cannot stay. So he listened, and there are several many. Imam Tirmizi, the 6 books. One of was Imam Tirmizi, and he was at its old age, he was blind. यार बड़ी मुश्किल से इंग्लिश बोल रहा हूँ, तंग ना कर, ऊपर से रिकॉर्ड भी हो रही है, ना करो तंग बेटा, इंग्लिश बोलते हुए बड़ा पेट्रोल खर्च होता है, ना करें तंग, आपने जाने ना बाहर चले जाएं, बैक बेंचर ना हो तो कहीं का, बैक बेंचर से तो अच्छा है बंदा अल्लाह मियाँ ऊपर उठा ले। ऐसे सही है कि नहीं सही? अच्छा बात सुनो, मेरा लेक्चर सारे का सारा खराब कर दी, चलो कोई बात नहीं, मिट्टी पॉइंट्स ओके। अब मैंने, हाँ, तुम्हारे सॉरी का मैं चार डालूं? इट्स ओके। अच्छा बोलो। सो इमाम तिरमिजी व्हेन ही यूज्ड टू ट्रैवल, ठीक है, यू आर माय फ्रेंड्स एज वेल ना, ओके, आई एम नॉट जस्ट अ टीचर, ओके, तो फ्रेंड्स के साथ तो हो सकती है ना, गपशप हो सकती है। अच्छा बात करो, बात सुनो मेरी, मैं वो वाला दोस्त हूँ जिसकी सिर्फ सुनी जाएगी, जिसको सुनाई नहीं जाएगी, राइट? आपको हम मौका देंगे जब आपको हम प्रेजेंटेशन से लौट करेंगे ना, हाँ, ओके बच्चे, मैंने ठेका उठाया है बोलने का, मुझे कोई हक नहीं चुप रहने का। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था, when he used to travel on the camel from one destination to another, the disciples used to walk with him and used to write hadith, and they were numerous in, like they were tens and hundreds in number, okay? So while he was moving through the village, he stopped and he said, for example, like this much years back, I crossed this village and there was a tree at this point. So go ask the villagers, was there a tree or not? If they say that there wasn't a tree, after this nobody will take hadith from me. It means I have a problem in my memorization. Okay, so the disciples went to the village and they asked and they said, yes, there was a plant, there was a tree over here which has been cut. अब मैं वो सुपर कंप्यूटर्स कहाँ से ला के दूं, मैं किस तरह से लोगों को समझाऊं कि हदीस का जो इल्म है वो को बैठ के कुछ सोलो राइटिंग नहीं था, इट वाज अ वेब बेस्ड, इट वाज sort of a literary effort that had very much to do with the memory, very much do with the intention, right? And let me tell you one thing more, all of these 6, only one is Arabi, Imam Ahmad, and the rest of 5 are non-Arabic. Bukhari was from Bukhara, Tirmizi, Nisai, they are all non-Arabics, they are Ajmis, and look at how marvelous they did. Allah तुमसे क्या काम ले ले भाई? दरबार मुस्तफा की जब नजर पड़ जाए, अल्लाह तुम्हें इमाम बना दे, एक मजदूर को इमाम बना दे, दरबार मुस्तफा से एक नजर तो पड़े, तुम अपने आप को इस काबिल तो बनाओ, तुम अपने अंदर वो लीडिंग कैपेबिलिटीज तो पैदा करो, फिर देखो दरबार मुस्तफा से नजर। अरे गप लगती है तुम्हें क्या, ये गप लगती है क्या तुम्हें? हम ऐसे उनको सलाम करते हैं यहां से, वो हमारे सलाम का जवाब नहीं देते, ये तो बड़ा रूड है। फरमाया है कि हर पीर के दिन, कौन से दिन?
जुमेरात की रात को मेरा ख्याल है गुलदस्ता पेश किया जाता है सलाम का, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलामती भेजी होती है। सब पढ़ो दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। एक बुजुर्ग थे, वो जो थे दुरूद शरीफ बहुत पढ़ा करते थे ना, तो वो गए अपने बुजुर्ग के पास, उन्होंने कहा जी मैं दुरूद शरीफ बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ, कहीं अल्लाह मियां मेरे से नाराज तो नहीं हो जाएंगे, मैं दूसरे जिक्र नहीं करता। तो उन्होंने कहा भाई दरूद शरीफ में भी तो अल्लाह का भी जिक्र हो रहा है ना, तो आप पढ़े, ठीक है। तो हमारे सिलसिले के ही एक हैं बुजुर्ग, उनसे ही मैंने सुना है वाकया ना। तो कहते हैं जब उनकी मौत का वक्त करीब आया ना, तो उन्होंने कहा कि मेहमान आ रहे हैं, खिड़कियां खोल दो, सब भी रात में। फिर जब खिड़कियां खोली तो फरिश्ते आए और उनकी रूह, जो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं ना उनकी रूह बड़े आराम से निकल जाती है, ये तो कन्फर्म है। सुभान अल्लाह। तो दुनिया में फिर तुम कितने सुकून से रहोगे। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना प्यारा जिक्र है, जबान भी नहीं थकती है, दिल भी नहीं थकता। यकीन करो, मैं वो महफिल में आपको बता नहीं रहा था, वो क्रिश्चियंस की जो महफिल थी, वो मेरे सामने उन्होंने ढोल रखा हुआ था, 3 घंटे 4 घंटे डजा डजा वो ढोल को मार रहे थे, ऐसे लग रहा था मेरे सर पे मार रहे हैं। इतनी मुश्किल होती है इबादत। हम्म। करनी है मुश्किल वाली इबादत, भेज दूं तुम्हें मॉन्क्स के पास, जाओगे ना तुम, तिब्बत के पहाड़ों के अंदर रहोगे ना, वहां पे तबीयत साफ हो जाएगी तुम्हारी। हाँ, तुझे तो मैं भेजता हूँ एक्सपीरियंस। हाँ ठीक है, तेरा एक्सपीरियंस मैं करवाता हूँ, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करवाऊंगा। है मेरी नॉन मुस्लिम्स भी हैं मेरे पास, बुद्धिस्ट भी हैं, उनको भेज दूंगा। इसको ले जाओ, ये एक है, इसका स्नान करो। स्नान का क्या मतलब होता है? हाँ वो प्योर वाटर भी तो होता है। अच्छा, सो नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ ग्रेट पर्सनैलिटीज दीज वर। यार व्हाट डू यू से अबाउट 6 लाख hadith in one go, which means that matan with every single sanad differently. 6 लाख। और कितनी कोट की बुखारी शरीफ में? 7। क्यों? 6 लाख कोट करनी चाहिए थी ना, 7,200 क्यों कोट की? ताकि पढ़ने वाले पे बोझ ना पड़े। और ये जितनी सही बुक है ये अलजामे के उसके ऊपर है। सही अलजामे, सही अलजामे मुस्नद से डिफरेंट होती है। ओके, सही अलजामे जो होती है ना, वो टॉपिक्स उसमें लिखे हुए होते हैं, ठीक है, थीम वाइज होते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, माशाल्लाह। पहला हो गया नियत, दूसरा हो गया तहारत, तीसरा हो गया नमाज, ठीक है, ज़कात, हज। तो ये फिक्र के जो टॉपिक्स है ना, उनके मुताबिक ये लिखी हुई होती है, राइट। शिकार, जंग, किताबुल अंबिया पढ़ो ना, कितना मजा आएगा तुम्हें। सारी गैब की खबरें, आगे क्या होने वाला है, किताबुल अंबिया में पढ़ो जाके, इमाम मुस्लिम की लिखी हुई है। अरे शागिर्द थे इमाम बुखारी के, उनसे हदीस लिया करते थे, फिर अपनी किताब जाके लिखते थे। हाँ, वो तदलील। तो मजे की बात यह है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब में एक रिवायत भी इमाम बुखारी से नहीं है। वो चूंकि वो शॉर्ट करते थे ना, आई टोल्ड यू कि जितनी वो नरेटर्स शॉर्ट होंगे, उतना आप सल्लम तक वास्ते कम हो जाएंगे, यू नो। सो दैट वाज देयर इंटेंशन, ओके। So he was writing, he was, finding some hadith, doing research on a hadith whole night. He spent whole night searching on it, searching on it, search। आज पर तो तुम फेसबुक पे ऐसे ऐसे करते हो ना, हम्म, सर्चिंग। एंड ही was
eating dates as well continuously. The whole छब्बी को क्या कहेंगे? Basket of dates, unintentionally and unaware of the fact that he ate all of them in one go and he died. He never knew that what he was doing. He was so much into that knowledge. Talk about Imam Malik. मुअत्ता की जो मैंने आपको बताया था ना, मदीना में कंपाइल हुई थी ना, पता लगा है ना, अभी पढ़ा है हमने। सुफियान सौरी जो थे वो कहां पर थे? वो मक्का में थे, इन कूफा। और मुअत्ता जो है वो पहली बुक, साहिह सित्ता से पहली बुक थी। Imam Malik used to wear a new dress, white dress, for every single lecture that he used to deliver or hadith. Look at the क्या कहेंगे उसको, protocol. Okay, once he was giving lecture, and while lecture his color of the face was fading, again and again. But after a very hard struggle, after an hour or so, he completed his dars lecture, and then he asked one of his disciple to check his back. Is there something into his shirt? So when he uncovered his shirt, he saw, बिच्छू को क्या कहेंगे, a scorpion ditching Imam Malik continuously, and he didn't care for it. It was the prestige of the knowledge. क्या कहते हो फिर? Some things are worth dying for, just like Jannah. मरने को दिल करता है जन्नत के लिए, ऐसे है कि नहीं? तो कुछ उलूम ऐसे हैं उनके लिए भी मरने को दिल करता है, ठीक है? Should I give you more examples? And let me tell you one thing. So there was an intention of Imam Bukhari rahmatullah alayhi that the book may not be so much lengthy that the reader is tired. और आज इमाम बुखारी की वो किताब किसने खोली है? बोलो, why would you not open it? असहुल किताब बाद किताबुल्लाह, सही तरीन किताब, ठीक है, किताबुल्लाह के बाद। अंडरस्टैंड? तो उन्होंने शॉर्टन किया। तो बाकी हदीस किधर गई, वो नेक्स्ट एरा में देखते हैं। The period of fifth era में है, the period is the compilation of hadith. The major objective of the compilers of 6 canonical books were authenticity of hadith. Consequently, they compiled only a fraction of a hadith they knew. For instance, Imam Bukhari knew 6 lakh hadith, but only compiled 7,200 in his Sahih. However, the later compilers wanted to preserve all hadith irrespective of their authenticity. Okay? भाई अगर कोई हदीस सही नहीं है, हसन है या गरीब हदीस तो है ना, उन्होंने उसको भी कंपाइल किया। ओके, तो क्या है, जो गरीब हदीस है वो फजाइल के लिए यूज की जा सकती है। जन्नत हो गया, नार हो गया, ईवल हो गया, बैड हो गया, सवाब हो गया, तो जो इंजंक्शन से रिलेटेड है वो फिर हम सही हदीस लेंगे, उसमें हम हैंकी पैंकी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, जरा सी भी। लेकिन जब थोड़े से फजाइल की बात आ जाए तो फिर हम थोड़ा सा लीनियंट हो जाते हैं, ठीक है? सो उन्होंने फिर इसी तरह एक और बुक है, उसका नाम है मुस्तखरजात। ओके, व्हाट मुस्तखरजात इज? मुस्तखरजात इज द पैरामीटर्स ऑफ दीज 6 राइटर्स, ठीक है ना? जैसे मुस्तखरजात रिलेटेड टू हाकिम। ओके, ना 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 ना, सुन लो मेरी बात। अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक कंडीशंस उनकी है ना हदीस को एक्सेप्ट करने की। ओके, तो all condition fulfilled, there were other hadith as well which were not mentioned in Imam Bukhari's book. They compiled it and that is known as mustakhrajat. वो क्या है, बुक्स देख लेते हैं, ठीक है? सो
So we have voluminous collection in this period. The following are major works of this period: Musnad Imam Ibn Yahya, Imam Tahawi, Sahih Ibn Hibban, Tabrani, Daraqutni, ये इमाम हाकिम, ठीक है, ऐसे जो मैं कह रहा था ना, इमाम हाकिम जो थी, इमाम बैहकी, इब्ने हुजैमा, ठीक है. Hope you enjoyed the lecture. So what did you get it from the lecture? इतना ख्याल तो किसी भी इल्म को कंपाइल करने में नहीं किया गया होगा. क्या ख्याल है? कुरान मजीद की कंपाइलेशन जो है ना वो 100% मुतवातिर है. उसकी वजह यह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वो कंप्लीट भी हो गया था, अरेंज भी हो गया था और लोगों ने हिफ्स भी कर लिया था. लेकिन हदीस तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल जिंदगी में वो तमाम काल अल्लाह कील काल है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डिनोट किया गया है. ठीक है ना जी, गो के वो भी वही की किस्म है. कुरान इज वही मतलू, माइंड इट एंड रिमेंबर फॉर योर लाइफ. Quran is wahi, form of wahi, which is matlu, that could be recited, while hadith of the Prophet Muhammad sallam is wahi ghair matlu. It is also wahi, it is also intuitive guidance, but it cannot be recited. बस इतना सा फर्क है. सर जो 40 साल पहले आप ये उसमें भी आपने कई ऐसी बातें की होंगी, तो आपके साथ जो रहने वाले होंगे उनको वो बातें याद भी होंगी, तो क्या वो भी हदीस होंगी? नहीं, नबूवत से पहले, नबूवत के बाद हदीस का सिलसिला शुरू होता है. और अगर आप सल्लम की नबूवत से पहले भी आप सल्लम ने कुछ बोला तो वो हमारे लिए तो हदीस ही है ना. व्हाट डू यू से गाइस? हाँ, लेकिन जो नबूवत के बाद जो सिलसिला है ना उसमें शरीयत भी आ जाती है ना. उस वक्त शरीयत तो थी नहीं, तो शरीयत के जो अहकामात है वो हम नबूवत के बाद लेंगे. देखें, टाई हो गया था मुअत्ता में और इमाम इब्ने माजा में, इनमें से किसको लेना है सही हदीस में? आपको पता है मुअत्ता नहीं है हदीस में, सही हदीस इब्ने माजा है. इब्ने माजा में कुछ एक्स्ट्रा हदीस मौजूद थी जो बाकी 5 में नहीं थी, नंबर 1, इसलिए उसको सिलेक्ट कर लिया गया. और दूसरा ये है कि जो मुस्तलहात तो हदीस जो हमने पढ़ी है ना वो प्रॉपरली अप्लाई इन साहिह सित्ता में ही होती हैं. तो इमाम मुअत्ता उससे पहले लिखी गई है, मुअत्ता उसी वक्त कंपाइल हुई थी जब ये साइंसेस ऑफ, तो उन्होंने जो इस्तिलाहात इस्तेमाल की हैं वो जरा थोड़ा डिफरेंट है. होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन, इसलिए उनको सिलेक्ट कर लिया. हदीस की बुक मिशकात शरीफ ये आमतौर पे मदारिस में पढ़ाई जाती, इसके बारे में इंट्रोडक्शन टू मिशकात हम देख लेते हैं थोड़ा सा. MISHKAT मिशकात शरीफ. 2-3 लाइनें पढ़ लेते हैं जल्दी से. अच्छा जी, विकिपीडिया क्या कहते हैं मिशकात शरीफ के बारे में? वो कितना ऑथेंटिक नहीं है विकिपीडिया. बाय वलीउद्दीन अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला अल खिताब अत-तबरी, क्योंकि मैं पिछले दिनों चाह रहा था मिशकात शरीफ के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ने के लिए ना, तो आज आपने क्वेश्चन किया है तो मुझे वो अपनी इंटेंशन याद आ गई, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. ठीक है. इज एन एक्सपेंडेड एंड रिवाइज्ड वर्जन ऑफ बगवीज मिसबाह as-सुन्ना, मसाबिह as-सुन्ना. ठीक है. Khatib at-Tabrizi rendered this version to the original text of more accessible to those not having an advanced knowledge to the sciences of hadith. आपको पता है साइंसेस ऑफ हदीस के साथ पढ़ना मुश्किल है ना. रैंडमली अगर हदीस होंगी तो जरा आसानी से पढ़ लेंगे, राइट. ठीक है, इसलिए आप हदीस की जो आम किताबें लिखी होती हैं उसमें चेन ऑफ नरेटर की तो बात ही नहीं होती ना. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज्यादा से ज्यादा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी, इससे ज्यादा आगे जाते ही नहीं है. ठीक है. सो क्या है, इसने ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी. It contains 5945 ahadith divided into 29 chapter and is considered to be an important collection of ahadith by Sunni Islamic scholars
एन एग्जाम्पल ऑफ, अब ये जो है ना विकिपीडिया ऐसी बातें करता है। सुन्नी शिया क्या होते हैं मुझे बताओ? नॉलेज तो नॉलेज होता है। जो भी आप सल्लम से मरवी है हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, राइट? तो देर इज नथिंग एज सुन्नी शिया, ये सिर्फ फैंटेसाइज किया गया। हम्म हम उसकी बात कर रहे हैं जो उस वक्त कंपाइल हो चुकी थी, अंडरस्टैंड? तो वो एक नॉलेज जो है ना, हम ऐसे नॉलेज चीजों को देखते हैं, ठीक है? अंडरस्टैंड? एनी अदर क्वेश्चन? वेलकम, होप आई आंसर्ड। अच्छा जी, आखिरी लाइन पढ़ लेते हैं, बस ठीक है, अब तो रह गया। फिर मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूंगा, ये मेरे इंटरेस्ट का असल में इसने क्वेश्चन किए। नहीं हुई जी, मेरा ख्याल है नहीं हुई।